Okay, Assalamu alaikum. So this is basically this is what we are going to do today. So today we are going to start with data visualization, and we'll start doing that using 2D plots. So this is an important part of any field. Like when you have data, you process that data, and then you want to look at your results. Okay. So this is all part of data visualization. So data visualization is helpful in understanding data and in predicting the trends in data, or learning the trends in data and then predicting the future course for the data or trajectory for the data. So you should know how to use certain data visualization techniques. Okay. So we'll start with the very simple 2D plots. 2D means they are two-dimensional plots. You can also go into 3D plots, and you can create 3D plots using Matlab and Octave. Uh, the 2D plots that we are going to learn about today are basically 2D line plots. So line plots, by line plot we mean like we are going to create a plot. Uh, in a plot, what you do essentially is that you plot different pairs of xy values. So you have a value for the x coordinate, and then you have a value for the y coordinate, and that value for the y coordinate is usually a function of the value for the x coordinate. Okay, so you have different values for the x and y coordinates, and in a line plot, those points that you get on the plot, so those points are joined using lines. Okay, so that is why it is called a line plot. So the data that we have in a computer is almost always discrete. It is not continuous, but the line plot creates an impression of a continuous data space. Okay, it is not continuous. Data is basically discrete. It is digital. There are gaps between the data, but nevertheless the line plot, it shows you that data as a continuous data. Okay, so we learn about that. Before we do that, we also need would look at a very helpful function. It is called Lin Space Function. It basically creates a vector of linearly spaced elements. So you specify the upper and lower limits for those values, and then this function generates uniformly spaced points between those upper and lower limits. So we look at this function. Then we will use this function to generate values for the x coordinate, and then we will apply some function on those x values and create a y vector, and then we'll plot the two. Okay, so we look at a couple of variations of the plot functions. Now we cannot cover every aspect of the plot function or every aspect of every function available to us in Octave and Matlab. So I'll just give you a couple of small demos, and then you can always look up at the detailed explanation or documentation of these functions, which is available on the website for Matlab. So you can go and look at the very extensive documentation available there, and you can learn more about these functions, and you can ultimately come and teach me and your class fellows as well. But here I'll just show you the very basics. So how can you use these functions? Similarly, along with the plot function, we'll also use another function. It is called the Hist function. In the newer versions of Matlab, it has been replaced by another appropriately named function called histogram. So the Hist function, basically it plots or draws a histogram. Now a histogram, you should know what a histogram is. So a histogram is basically, it plots the distribution of values. Okay, so how many values of a particular size or of a particular range have appeared in the data. For example, if I want to plot a histogram of the heights of your class, okay, so I calculate the heights of every single student in your class, and then I want to look at the distribution of heights.
ठीक है, कि कितने लंबे कितने लोग हैं, कितने लोग छोटे कद के हैं, कितने लोग दरमियाना कद के हैं. इफ आई वांट टू find that distribution, so I can create a histogram plot. Histogram plot में क्या होगा कि on the x axis we will have different ranges of heights. कि ये रेंज है जी फॉर एग्जांपल 4.5 फुट से लेके 5 फुट तक, ये रेंज है फिर 5 से 5.5 तक, फिर ये रेंज है 5.5 से 6 तक, फिर ये रेंज है 6 से 6.5 तक, फिर ये वाली रेंज है 6.5 से 7 फुट तक, से फॉर एग्जांपल. एंड देन वी सी हाउ मेनी पीपल फॉल इन द फर्स्ट इंटरवल और बिन, उसको हम बिन भी कहते हैं. आप यूँ समझ लें कि जैसे आपने एक कतार में 5-6 बिन्स रखी हैं और हर बिन में एक ख़ास हाइट वालों की तादाद स्टोर की जाएगी. ठीक है, तो पहला जो बिन आपने रखा है उसमें 4.5 से 5 फुट के जो लोग हैं, कितने लोग हैं उनकी तादाद हम उसमें स्टोर करते हैं. दूसरे बिन में 5 से 5.5 फुट वाले, तीसरे बिन में 5.5 से 6 फुट वाले, चौथे बिन में 6.5 से 7 फुट वाले से. सो उसके बाद जब ये नंबर्स हम उसमें डाल देते हैं कि इसमें 5 लोग हैं, ऐसे लोग जिनकी हाइट 4.5 से 5 फुट के इंटरवल में पड़ती है, उनकी तादाद है से फॉर एग्जांपल 5, तो उस बिन में 5 की वैल्यू होगी. नेक्स्ट में मे बी 5 से 5.5 में हमारे पास से ज़रा ज़्यादा लोग होंगे, 10 लोग होंगे. 5.5 से 6 में फिर हमारे पास से 15 या 20 लोग होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा होंगे. तो वो तादाद आप उसमें रखते हैं. तो जब आप इनको प्लॉट करते हैं, प्लॉटिंग मीन्स के हर बिन में जो वैल्यू पड़ी है उस वैल्यू के प्रोपोर्शनल आप एक वर्टिकल बार ड्रॉ करते हैं. तो ये तमाम जो बार्स हैं ये मिल के आपको एक हिस्टोग्राम बना के देती हैं. सो वी लुक एट द हिस्टोग्राम. और हम अपनी पिछली जो डिस्कशन थी ना, हमने यूनिफॉर्म रैंडम नंबर्स और रैंडम नंबर्स के बारे में कुछ गुफ्तगू की थी, तो हम उनको यूज़ करेंगे फॉर क्रिएटिंग दीज हिस्टोग्राम प्लॉट्स. तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये यूनिफॉर्म रैंडम नंबर्स को यूनिफॉर्म रैंडम नंबर्स क्यों कहते हैं, और रैंडम नंबर्स जो कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट करते हैं तो उनको नॉर्मल रैंडम नंबर्स क्यों कहते हैं. ठीक है, सो हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, मतलब कुछ एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशंस देंगे. उनमें हम सिंपल एक वेक्टर y को प्लॉट करेंगे, फिर एक वेक्टर x1 y1 को प्लॉट करेंगे, वेयर x1 इज अ साइनसॉइड. फिर हम साइनसॉइड्स ऑफ दिस फॉर्म इनको प्लॉट करेंगे. ये जो फॉर्म है ना साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ मैंने अल्फा का सिंबल यूज़ किया हुआ है. यूजुअली इट इज़ phi plus omega t. So phi is the phase difference. So here alpha is the phase difference. And omega is the angular frequency and t is your time. ठीक है, तो इस फॉर्म में हम साइनोसाइड्स को ड्रॉ करेंगे. उसमें आप देखेंगे कि आप ओमेगा फ्रीक्वेंसी को वैरी करते हैं तो वहाँ पे साइनोसाइड की फ्रीक्वेंसी वैरी होती है, और अगर आप फेज डिफरेंस को वैल्यू करते हैं तो सिग्नल साइनोसाइड कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है. ठीक है, सो वी लर्न अबाउट दीज. सो वंस वी डू दीज, आई होप कि आपको पता चल जाए कि जी कैसे हम यूज़ कर सकते हैं प्लॉट फंक्शन को इफ़ेक्टिवली इन ऑर्डर टू प्लॉट डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट द लिन स्पेस फंक्शन. ठीक है, सो ये जो लिन स्पेस फंक्शन है, इट बेसिकली क्रिएट्स अ लीनियर वेक्टर. ठीक है, सो इसकी आप दो फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं. सो से फॉर एग्जांपल वी वांट टू क्रिएट अ लीनियर वेक्टर. ठीक है, ऑलरेडी एक वेक्टर है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ. एंड देन से वी वांट टू क्रिएट अ लीनियर वेक्टर x. ठीक है, सो x को हम कैसे क्रिएट करते हैं? x को हम क्रिएट करते हैं यूजिंग लिन स्पेस. ठीक है, लिन स्पेस. सो लिन स्पेस क्या करता है, आप इसको दो वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं. सो से इसको मैं पहली वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ -10 की, और दूसरी वैल्यू मैं प्रोवाइड करता हूँ +10 की. सो -10 इज़ द लोअर बाउंड, +10 इज़ द अपर बाउंड. आप सिंपल ये जो लिन स्पेस फंक्शन है ये क्या करेगा, इसको मैंने और कोई आर्गूमेंट नहीं दिया, जस्ट द लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड. तो ये बिटवीन दीज लोअर एंड अपर बाउंड्स इट विल क्रिएट 100 पॉइंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, -10 से शुरू करेगा, +10 तक जाएगा, और आपके पास 100 पॉइंट्स का वेक्टर होगा. सो x का जो साइज होगा, डायमेंशंस होंगे, वो 1/100 होंगे. ठीक है, सो व्हेन यू प्रेस एंटर यू सी दैट यू हैव अ वेक्टर ऑफ साइज 1/100 और उसकी इनिशियल वैल्यू -10 और फाइनल वैल्यू +10. ठीक है,
सो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज एक्स क्लास डबल और इसकी डायमेंशन है 1/100, इसकी इनिशियल वैल्यू है -10, ठीक है। सो अगर हम इसको डबल क्लिक करें तो यहाँ आपको ये जो विंडो है ना, वेरिएबल एडिटर विंडो, इसमें आपको इसकी तमाम वैल्यूज़ नज़र आ जाएंगी। सो इसकी इनिशियल वैल्यू -10 है जैसे कि यहाँ हमने स्पेसिफाई की, और इसकी फाइनल वैल्यू 100th वैल्यू जो होगी that would be +10. So if you go till the very end तो ये +10 है, ठीक। और बाकी जो हैं वो इवनली स्पेस्ड हैं, हर दो वैल्यूज़ के बीच जो डिफरेंस है that is इक्वल, ठीक है। तो इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। अच्छा जी, अच्छा, so this is x. Now say we want to find, we find the square of x, ठीक है। So let us find the square of x. So कैसे मालूम करेंगे x का square? So we can use this function, the caret function, और हम इसका square मालूम कर सकते हैं। Let's see if it works. अच्छा, only square matrix arguments are, so हम element wise power basically इसका मालूम करेंगे। तो you should use the dot operator before this exponentiation operator, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि लेट्स सी इफ इट वर्क्स। आई फॉरगॉट कि मुझे ये एलिमेंट वाइज पावर यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ओके, इफ यू प्रेस एंटर सो यू हैव y एंड y हैज़ द वैल्यूज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x, ठीक है। सो हमारे पास वी हैव नाउ टू वेक्टर्स x एंड y। x में हमारे पास -10 से लेके 10 तक की वैल्यूज हैं, और y में वी हैव द स्क्वायर ऑफ x, y में वी हैव द square of x. So let us plot these values. So plot आप कैसे करते हैं? So in order to plot these values you can call the plot function, और plot function में you first specify values for the x axis, so वो हमारा x vector है, and then you specify values for the y axis, वो हमारा y vector है, ठीक है। So you say plot x and y and then you press enter, तो आपको ये plot करके दे देगा ऑक्टेव आपको ये। तो ये यू कैन सी दिस इज अ पैराबोला, ठीक है। y is equal to x square, it is a parabola. So you can plot all that you have learned about parabolas, आप ये देख सकते हैं। In fact this is a quadratic function, any quadratic function जिसको आप ड्रॉ करेंगे, any quadratic function with a square term, ठीक है। so उसकी शेप पैराबोलिक होगी। so अब इसकी ओरिएंटेशन मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है, ओरिएंटेशन इसकी मुख्तलिफ हो सकती है, बट एसेंशली दिस इज़ हाउ इट वुड बी। सो ओरिएंटेशन को आप चेंज भी कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि जी आप प्लॉट करें x और -y को, ठीक है। तो ये प्लॉटिंग x बट -y, यानी हमारे पास y इज इक्वल टू -x², से फॉर एग्जांपल इस किस्म का फंक्शन है, तो वही पैराबोला होगा, लेकिन अब उसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गई, इट इज़ इन्वर्टेड नाउ, ठीक है, नाउ इट इज़ इन्वर्टेड। और अगर हमारे पास ऐसा हो कि y इज इक्वल टू x², सॉरी x इज इक्वल टू y², ठीक है, तो फिर वो एक्सिस के, जिस एक्सिस के अक्रॉस ये होगा, तो यू कैन बेसिकली ट्राई ऑल दीज वेरिएशंस, ठीक है। यहाँ मैटलैब का आपके पास फ़ायदा ये है, ऑक्टेव मैटलैब, you can try all these variations and you can learn about, you can refresh your FSC mathematics and you can refresh all the other maths that you're learning here. So वो भी आप यहाँ पे extensively उसको practice कर सकते हैं। अच्छा, so here we learned about basically the Lin Space Function. We created this vector x using the Lin Space Function, ठीक है। हमने x को क्रिएट किया यूजिंग द लिन स्पेस फंक्शन। उसमें आप क्या स्पेसिफाई करते हैं? यू स्पेसिफाई द लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने कोई और चीज़ नहीं स्पेसिफाई की, हमने x जो वेक्टर है उसकी सबसे छोटी वैल्यू और उसकी सबसे बड़ी वैल्यू स्पेसिफाई की। बाकी ऑक्टेव फिर उन छोटी और बड़ी वैल्यूज़ के बीच और इनको मिला के 100 वैल्यूज़ का एक वेक्टर जनरेट करता है, जो कि तमाम इक्वली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चाहेंगे नहीं मुझे 100 वैल्यूज़ का वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे ज़रा
कम वैल्यूज़ का वेक्टर चाहिए या ज़्यादा वैल्यूज़ का वेक्टर चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वी वांट x to start from -10 and get to 10, बट हम नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें 10 चाहिए, 100 नहीं चाहिए, ठीक है। सो यू कैन डू दैट। आप यहाँ पे आखिर में नंबर ऑफ पॉइंट्स का एक आर्गूमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब जब आपके पास x जनरेट होगा तो वो आप देखें उसमें उसका साइज़ है 1/10, ठीक है। So now you have reduced the size. You have specified के what should be the size of the vector x जो कि आप जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने उसका साइज स्पेसिफाई कर दिया 10, ठीक है। अच्छा, now again we can calculate y. So we can calculate y. Let us calculate y to be x का element y square. So y is also a vector of dimension 1/10. अच्छा, ये आप हमेशा याद रखें when you are plotting two vectors, so these vectors must have the same dimensionality, they must have the same size and dimensionality, okay. So plot xy जब आप करते हैं, so they must have the same size, so they have the same size here, so it doesn't matter. So now when you say plot x and y, so आपको ये वाला प्लॉट नज़र आएगा, ठीक है। ये और वो दोनों एक ही सेम ही प्लॉट्स हैं, दोनों क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन ये ज़रा इसमें जर्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। ये ज़रा डिसकंटिन्यूस है क्योंकि इसमें पॉइंट्स कम है। अगर इन पॉइंट्स को आप मज़ीद कम कर दें तो इसमें मज़ीद जर्क्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। सो इट इज़ नॉट एज कंटिन्यूस एज द प्रीवियस फंक्शन। क्यों? उसमें 100 पॉइंट्स प्लॉट कर रहे थे आप, तो वो बड़ा कंटिन्यूस था, और यहाँ पे 10 पॉइंट्स हैं। अगर इन पॉइंट्स की तादाद में मज़ीद कम कर दूँ, ठीक है, से फॉर एग्ज़ाम्पल हम x को फिर से जनरेट करते हैं, दिस टाइम विद 5 पॉइंट्स से, and then we find y and then we plot x and y. So now उसमें आपको डिसकंटिन्यूटी या जर्क्स नजर आएंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि वाकई दिस इज अ लाइन प्लॉट। यहाँ पे एक पॉइंट है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स को जो है आपने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया हुआ है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट है उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया हुआ है। हमारे पास कुल 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स को हमने 5 लाइनों के ज़रिए, सॉरी 4 लाइनों के ज़रिए उनको ज्वाइन किया हुआ है। तो दिस इज़ अ लाइन प्लॉट जो कि हमने जनरेट किया हुआ है। जैसे जैसे आप पॉइंट्स कम करते जा रहे हैं तो उसमें वो डिसकंटिन्यूटी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो आई होप यू नो व्हाट लिन स्पेस फंक्शन इज़, व्हाट इट डज, और उसमें आप कैसे वेरिएशंस ला सकते हैं, ठीक है। तो लिन स्पेस वेक्टर वुड जनरेट यू अ वेक्टर विद अ फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, और आप ना सिर्फ पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं बट यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द अपर एंड लोअर द लिमिट्स फॉर द वैल्यूज इन दैट वेक्टर, ठीक है। सो इट इज़ यूजफुल, इसको हम यूज़ करेंगे, यूजफुल है, इसको हम यूज़ करेंगे फॉर जनरेटिंग वेक्टर्स। सो लेट अस गो टू द एडिटर नाउ, लेट मी क्लियर दिस थिंग। अच्छा, so I hope like we have learned about Lin space and we have learned about these two variations, and we have started to learn about the plot function, okay. So we did something like this, plot xy, ठीक है। so हमने दो वेक्टर्स को x और y को प्लॉट किया, one is along the x axis, the other is along the y axis। अच्छा, लाजमी नहीं है कि x एक्सिस पे जो वेक्टर होगा उसका नाम x ही होना चाहिए, y एक्सिस पे जिस वेक्टर को आप प्लॉट करें उसका नाम y होना चाहिए। देयर इज़ नो सच कंडीशन or limitation from Matlab or Octave. This is up to the programmer. If you want to use these identifiers, fine. If you do not, that is also fine. No problem with that. Okay. Now, what we are going to do right now is we are going to plot a sinusoid. A sinusoid is basically either a sine or a cosine. ठीक है, साइन या कोसाइन वेव को हम प्लॉट करेंगे, and we would plot it over some interval, say minus pi to plus pi or minus 2 pi to plus 2 pi, and we learn how to do that, okay. So let's come here. For example, we want to plot the sinusoid, ठीक है। Now sine is basically a function of angle theta, ठीक है, and here theta would be in radians, ठीक है। तो हम start करेंगे say from minus pi to plus pi, so that way हमारे पास जो है वो एक साइकिल साइनोसाइड का आ जाएगा।
So first of all we need to generate the values for the angle. ठीक है, अब you can call the angle any name. You can call it theta, for example. So say we say theta is equal to what? So we are generating theta using the Lin space function. और Lin space function में हम we specify के the minimum value that we'll have is minus pi, the maximum value that we'll have is plus pi. We don't need to specify plus, and say for example we want 360 points. ठीक है, ताकि एक डिग्री हमें मिले. सो माइनस पाई से प्लस पाई तक जाएंगे और हमारे पास 360 पॉइंट्स होंगे. ठीक है, सो थीटा वुड बी अ वेक्टर with 360 values, and it would start from minus pi radians and it would go up until pi radians. ठीक है, तो साइन और कोसाइन जो फंक्शंस हैं मैटलैब के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, दे बाय डिफॉल्ट दे assume that the angle is in radians. Okay, so we will give it angle in radians. There is the other version of sine and cosine functions that you should be aware of, sine d and cosine d. So they expect the angle to be in degrees. So we can use that one as well, but let's first use this one. Now we want, say this is theta, and then we have the sine function and the cosine function. So we want to calculate that. So let us find out the sine of theta. Okay, so let us call it s theta. S theta is basically sine of theta. Okay, so it may be confusing, but let's see, like you can use it this way as well. So s theta is basically sine of theta. You can choose any other identifier for it. I chose s theta, it doesn't matter. And let us find cosine theta. Cos theta is equal to cos of theta. So we are calling the cos function and we are giving it the theta vector as input. And similarly we are calling or invoking the cosine function and we are giving theta as the vector, input vector. Acha. So now we need to plot theta and sine theta and then theta and cosine theta. We'll do it in a step-by-step manner so that you can capture all the intricacies involved therein. अच्छा, से यहाँ पे हमने थीटा प्लॉट फंक्शन को कॉल किया. ठीक है, वी डोंट हैव एनी वेरिएबल्स हियर, बट यहाँ पे हमने जब प्लॉट फंक्शन को कॉल किया, सो हमने डायरेक्टली प्लॉट फंक्शन को कॉल किया. बट व्हेन यू कॉल द प्लॉट फंक्शन, Matlab or Octave creates something that is called a figure object. ठीक है, it creates a figure object. Now that figure object is then used to draw the plot. That figure object is then used to draw the plot. The figure object, अगर आपको याद हो, say for example यहाँ पे मैं फिर से एक छोटा सा create कर लेता हूँ एक plot. So this is Lin space say -2 plus 2, and then we have say 10 points, and then we have say y equal to x ka square, element y is square. Where is the character? ठीक है, and then we say plot x y. Okay, so when you do that, so you have here a window. This is, you can call it a figure object, and its name is figure 1. Its caption here is figure 1. This is not exactly its name, but this is its caption. So उस पे आपको ये plot नजर आ रहा है. ठीक है, अच्छा. So Matlab या Octave creates this figure object and it plots this particular plot that you want to plot on this figure object. तो आपको graphically इस figure object पे ये plot नजर आता है. ठीक है, अच्छा. यहाँ पे कोड में it is always a good idea that you yourself create the figure object और उसको आप कोई नाम भी दें, बाद में ये आपके काम आ सकता है. ठीक है, तो हम से we say f is equal to figure. ठीक है, so हमने figure object create कर लिया, and then we can plot, and जो plot हम करेंगे उसमें हम figure object तो नहीं specify करेंगे, but वो ये जो f हमारा figure object है इस पे वो plot वो होगा. ठीक है, अच्छा.
So then we say we do the plotting. We want to do the plot. So क्या चीज़ हम plot करना चाहते हैं? We want to plot theta on the x-axis along with sine theta on the y-axis. ठीक है? So this is what we want to do. अच्छा जी. So let's do it. ये हमारा कोड है, फिलहाल हम ये कर रहे हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर cos थीटा को भी प्लॉट करेंगे. ठीक है? अच्छा, इसको हम सेव एंड रन करते हैं. लेट अस चेंज दिस डायरेक्टरी. करंट डायरेक्टरी ये हो जाए. अच्छा, ये जी हमारा साइन वेव हमारी प्लॉट हुई है, एंड दिस इज़ फॉर वन कंप्लीट साइकिल. दिस इज़ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द साइन वेव फ्रॉम -π टू +π. अच्छा, आप ये रेंज चेंज भी कर सकते हैं. यू कैन से कि जी मुझे 0 से 2π तक जाना है. ठीक है, 0 से 2π तक जाना है. So you can do that as well. अच्छा, so this is the sine wave. It starts from 0 and it goes up until 2π. तो यहाँ आपके पास एक साइकिल जो है साइन वेव का आपने प्लॉट किया है. अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जी हम कोसाइन थीटा भी प्लॉट करें. उसका क्या तरीक़ाकार होगा? अच्छा, अगर आप कहते हैं कि जी एक मरतबा मैंने साइन को प्लॉट किया, नेक्स्ट में वी वांट टू प्लॉट कोसाइन थीटा, एंड इफ़ यू वांट टू डू इट दिस वे. ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू इट दिस वे कि पहले प्लॉट थीटा एंड साइन थीटा एंड देन प्लॉट थीटा कोसाइन थीटा, और आप कहेंगे जी शायद दोनों प्लॉट हमें नजर आएँ, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एज एंटिसिपेटेड. जैसे आप चाह रहे हैं ना कि ये वैसे काम करे, ये वैसे काम नहीं करेगा. आपको मोस्ट जो रिसेंट आपने प्लॉट किया हुआ सिर्फ वही नजर आएगा, पिछला वाला ओवरराइड हो जाएगा. ठीक है, तो अगर आप दोनों प्लॉट्स साइड बाय साइड देखना चाहते हैं, यू वांट टू सी द साइन एंड कोसाइन वेव्स साइड बाय साइड, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. दो काम आप कर सकते हैं. फर्स्ट, यू कैन यूज अ फंक्शन कॉल्ड होल्ड. ठीक है, आपने साइन थीटा को प्लॉट किया, देन यू फिगर ऑब्जेक्ट के लिए आप इस फंक्शन को कॉल करें होल्ड ऑन. ठीक है, यू से होल्ड ऑन. होल्ड ऑन से क्या होगा कि नेक्स्ट अगर आप कुछ प्लॉट करना चाहते हैं तो वो पिछले वाले को इरेज नहीं करेगा, बल्कि पिछला वाला रिटेन रहेगा, नेक्स्ट वाला उसके साथ साइड बाय साइड प्लॉट होगा. ठीक है, दिस इज व्हाट होल्ड ऑन मीन्स. जब आप होल्ड ऑन करते हैं तो देन यू कैन प्लॉट एनी अदर प्लॉट्स दैट यू वांट टू प्लॉट, और वो इरेज नहीं होंगे. ठीक है, वो वैल्यूज़ आपके पास जूं की तूं रहेंगी और आप उस पर बस प्लॉट कर सकते हैं. वंस यू आर डन, सो देन यू कैन से होल्ड ऑफ. ठीक है, सो अब जब आप इन दोनों को प्लॉट करेंगे तो आपके पास साइड बाय साइड you will have the sine wave which appears in blue, and you'll have the cosine wave which appears in red. ठीक है, दोनों functions या waves आपको नजर आएंगी. ठीक है, so how you were able to do this? You were able to do it by using the hold function. ठीक है, the hold on. आपने hold on किया, then आप जितने plots करना चाहते हैं वो करें, और फिर finally you can hold off. ठीक है, अच्छा, सो इसके साथ आप कुछ और भी प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, इसके साथ आप कुछ और भी प्लॉट कर सकते हैं. लेट्स सी, टेंजेंट. लेट्स ट्राई टेंजेंट. ठीक है, लेट्स ट्राई टेंजेंट टी थीटा. सो दिस इज बेसिकली टेंजेंट ऑफ थीटा. आई एम नॉट श्योर, टेंजेंट की वैल्यूज बाज़ जगहों पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो आउट ऑफ स्केल ना हो जाए, बट आपने कॉस थीटा साथ में प्लॉट किया, अब आप इसके साथ टेंजेंट थीटा को भी प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, विच इज़ टी थीटा. तो आप देखें जी वो स्केल का मसला आ रहा है. ठीक है, बाज़ वैल्यूज़ टेंजेंट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. तो साइन और कोसाइन की तो मैक्सिमम वैल्यू +1 है, मिनिमम -1 है, जबकि टेंजेंट जो है वो बास पॉइंट्स पे इन्फिनिटी पे जाता है. कौन से पॉइंट से? वो टेंजेंट इज़ बेसिकली साइन डिवाइडेड बाय कॉस. तो 90 जो है, साइन ऑफ 90 इज़ 1 एंड कॉस ऑफ 90 इज़ 0. सो 1/0
it makes it like go to infinity. It is undefined at that point. तो ये जो आपको पॉइंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, ये उसकी वजह से हैं, ठीक है। सो इसको हम खैर किसी और उस पर शो कर लेते हैं। Instead of using tangent function, so we can say use the square function, ठीक है। स्क्वायर की वैल्यूज़ भी शायद बड़ी हों। Let us use the square root function, ठीक है। So let us take the square root of, sorry, this is sq root and this is basically sqrt, ठीक है। थीटा का स्क्वायर रूट लेते हैं और उसको साथ में प्रिंट करते हैं, तो वो स्केल का इशू इतना नहीं रहेगा फिर। तो हम यहाँ पे सिंपल ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि आप होल्ड ऑन होल्ड ऑफ की मदद से जितने भी प्लॉट्स करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, और आपको नज़र आएंगे। सो यहाँ पे अब आप देखें कि यू हैव the sine wave, then the cosine wave, and then the square root function. So square root function भी just like the quadratic square function उसी की शेप का है, parabolic है square root function भी, ठीक है। Essentially it is a parabolic function। अच्छा, so I hope like इतना आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। नंबर वन, कैसे आप प्लॉट करेंगे किसी फंक्शन को। यहाँ पे प्लॉट करने से मुराद कि यू आर बेसिकली गोइंग टू प्लॉट टू वेक्टर्स, ठीक है। सो द प्लॉट फंक्शन इन ऑक्टेव और मैटलैब 8 इज एक्सपेक्टिंग 2 वेक्टर्स ऑफ द सेम साइज। इसको आप और भी यू कैन गिव इट अदर इनपुट्स एज वेल, ठीक है। सो वील ट्राई दोज वेरिएशंस एज वेल। यहाँ पे आई टेक जस्ट अ स्मॉल ब्रेक, क्योंकि बिजली का पता नहीं होता, तो वो आ जाए, अगर चली जाए बीच में तो मेरा ये पूरा सेशन ज़ाया हो जाएगा। सो आई टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड देन रिज्यूम अगेन।